पिला माने हमें प्रीवियस क्लास रे प्रिज्म फार्मूला पढ़िथिले जोड़ा एमदी थिला mu is equal to sin a plus dm by 2 whole divided by sin a by 2 एटा हम प्रीवियस क्लास रे पढ़िछे जोटी mu थिला हमर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थिला एंगल ऑफ प्रिज्म dm थिला एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन ठीक अछि एबे जिबा डेविएशन थ्रू स्मॉल एंगल प्रिज्म deviation through small angle prism बुझे चेष्टा करो माने ना मोटे प्रिज्म नहीं चाहिए स्मॉल एंगल प्रिज्म माने एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल एंगल ऑफ इमर्जेंट भी स्मॉल ये सब स्मॉल हम जानि छै जे एंगल स्मॉल हैला तो sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा cos theta is approximately equal to 1 and tan theta is approximately equal to theta हमर स्थिति कोन थिला पिला माने हमर एटा थिला इंसिडेंट रे टिक मने पकाओ इंसिडेंट रे एटा थिला हमर नॉर्मल एटा थिला हमर रिफ्रैक्टेड रे एटा थिला हमर नॉर्मल देन एटा थिला हमर इमर्जेंट रे एटा हमर किछ थिला i थिला एटा किछ r1 थिला एटा किछ r2 थिला एटा किछ e थिला मने पड़छ पिला देखि दियो पिला माने आमे जदि एटी स्नेल्स लॉ पकेबा एटी स्नेल्स लॉ पकेबा एटी स्नेल्स लॉ पकेला में कोन पाइबा sin i by sin r1 is equal to mu एठी जदि हमें स्नेल्स लॉ पकेबा हमें पाइबा sin i by sin r1 is equal to mu बट आमे जानि छै जदि एंगल जदि छोटा हले देन sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड cos sin थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा दैट मींस sin i is approximately equal to i sin r1 is approximately equal to r1 is equal to mu that is implies to i is equal to केते हेला पिला माने mu into r1 अगेन पिला एठी जदि हमें स्नेल्स लॉ पकेबा ताले हमें कोन पाइबा पिला एटा को इक्वेशन 1 दे दोछि एठी जदि स्नेल्स लॉ पकेबा हमें कोन पाइबा नै sin r2 by sin e equal to 1 by mu तर मु लिखि परिबिटी कोन पिला माने r2 by e हला 1 by mu that is implies to e is equal to mu into r2 पिला माने टिके मने पकाओ जदि प्रिज्म न थांता ये एमती जाई थांता तो प्रिज्म अछि तो ये एतिकी डेविएट करी छी एटाला एंगल ऑफ डेविएशन तो एंगल ऑफ डेविएशन पिला माने हमें जानि छे जे i plus e is equal to d plus a i plus e is equal to d plus a ठीक है पिला तो i जगह मु लिखि दउ छी mu r1 e जगह लिखि दउ छी mu r2 is equal to केते d plus a आमे जदि पिला माने mu टा कॉमन नबा तले r1 plus r2 हे गला d plus a r1 plus r2 जगह a लिखि देबा हम जानि छ r1 plus r2 हेला a तो एटु a लिखि देले केते जो mu a is equal to d plus a that is implies to d is equal to mu a minus a that is implies to d is equal to mu minus 1 into a हमने हमें गोटे कथा कंक्लूजन रे पहुंचले फार्मूला हमको बहुत इंपोर्टेंट आगो को दरकार अछि डेविएशन कहा ऊपर डिपेंड कला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर डिपेंड कला आ कहा ऊपर डिपेंड कला एंगल ऑफ प्रिज्म ऊपर डिपेंड कला कंडीशन पिला माने एया जे एई फार्मूला सेते बेले वैलिड करिवो जेते बेले एंगल ऑफ इंसिडेंस भी स्मॉल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी स्मॉल i भी स्मॉल r1 भी स्मॉल r2 भी स्मॉल e भी स्मॉल ठीक अछि पिला माने फटाफट देखि दियो तनि हाथि मन रखिबा कोन d is equal to कोन पिला माने mu minus 1 into a डिस्पर्शन कोन पिला माने डिस्पर्शन कहले कोन पिला माने हम गोटे काम कले गोटे प्रिज्म नै गले अरे प्रिज्म रे व्हाइट लाइट पकेले
आमे प्रिज्म बाहर गोटे स्क्रीन लगेले प्रिज्म कौन कला ए व्हाइट लाइट को सातटा डिफरेंट कलर रे भांगी देला सातटा 1 2 3 4 5 सातटा कलर रे भांगी देला स्क्रीन ऊपर किछि एमती आसिला आमे मार्क कले जो सातटा कलर अच्छी विविगर हिसाब से आसिला वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड एमती आसिला एंड सबुठू बेसी डेविएशन हो वायोलेट सबुठू कम डेविएशन हो रेड तो आमे डिस्पर्शन कहले कौन बुझिबा आमे जदि गोटे प्रिज्म देकी व्हाइट लाइट को पास करिबा हम प्रिज्म कौन करूची से व्हाइट लाइट को सातटा डिफरेंट कलर रे भांगी दउची आमे जदि गोटे प्रिज्म देकी सातटा व्हाइट लाइट को पास करिबा तल प्रिज्म ताको सातटा कलर रे भांगी दउची त माने भांगी दउची माने बुद्धि माने जोड़ी हे कि थिले त माने व्हाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो व्हाइट गोटे सिंगल कलर नहीं व्हाइट गोटे कॉम्बिनेशन ऑफ कलर्स बहुत गुडे कलर मानकर कॉम्बिनेशन रे कौन फॉर्मेशन है व्हाइट फॉर्मेशन है व्हाइट कलर फॉर्मेशन है ओ कथा बुझा पड़ुचे ताले हम कौन कहबा डिस्पर्शन कहले कौन होबो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट into its constituent म्यूजिक जोर बजौतला था से पॉज करे पड़ला देखा व्हाइट लाइट पड़ला पर प्रिज्म देखली सातटा कलर स्क्रीन ऊपर आसुची the splitting of white light into its constituent colors is called dispersion कौन सेटा कहूचे डिस्पर्शन बोली कहूचे ठीक अछि पिला माने ए डिस्पर्शन आमे जदी अगेन एठी गोटे प्रिज्म रखि देबा उल्टा रे एमति प्रिज्म रखि देबा देन से पुणी ए सातटा कलर को जोड़ी के गोटे सिंगल कलर कर दो ताले आमे देखिले गोटे कथा हम माइंड भीतर को आसेला ठीक अछि भाई से सातटा कलर को सेपरेट करो किसी प्रॉब्लम नहीं है तो काहे कि सेमति करूची काहे कि वायोलेट अधिक डेविएशन होची रेड कम डेविएशन होची सबटु बेसी डेविएशन वायोलेट होची सबटु कम डेविएशन रेड होची एमति काहे होची बेसिकली कॉज ऑफ डिस्पर्शन कौन कॉज ऑफ डिस्पर्शन एठी हम गोटे नुवा कथा सिखिबा आमे पूर्व एया पढुतले जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो मटेरियल ऊपर डिपेंड करे मटेरियल ऊपर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करे ग्लास रो अलग वाटर रो अलग बट एटा में नुवा कथा गोटे जान छे भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वेवलेंथ ऊपर डिपेंड करे मान डिफरेंट कलर रो लाइट पाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग सेही ग्लास अछि ग्लास वायोलेट कलर पे जति रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दबो रेड कलर पे सेति दबनी इंडिगो पे सेति दबनी अलग अलग कलर पे ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग माने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दुटा फैक्टर ऊपर डिपेंड करे गोटे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गोटे कौन वेवलेंथ ऑफ लाइट तो कच्चे बोली जने साइंटिस्ट थिले कच्चे रिलेशन कौन कहला कच्चे कहला जे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिकली एग्जैक्ट कौन एग्जैक्ट a plus b by lambda square plus c by lambda to the power 4 बट हमके एते कथा एते ड्रामा हमको जानि बार नाही हमको सिंपल जानि बार अछि जे mu is inversely proportional to lambda त माने जहा रो वेवलेंथ अधिक ता पई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम त माने ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सब कलर लाइट पई समान नहे जदि मु वायोलेट नेबी जदि मु इंडिगो नेबी जदि मु ब्लू नेबी जदि मु ग्रीन नेबी जदि मु येलो नेबी जदि मु ऑरेंज नेबी जदि मु रेड नेबी समस्त को पाई ग्लास रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 नहे अलग अलग कलर पे अलग अलग कथा बुझा पड़े तल बेसिकली ये काहे की बेसी डेविएट कला काहे ना वायोलेट रो वेवलेंथ सब कम विविगर हिसाब रे v i b c y o r सबटु वेवलेंथ कहार अधिक रेड रो ताठारु कम ऑरेंज रो ताठारु कम येलो रो ताठारु कम ग्रीन रो ताठारु कम ब्लू रो ताठारु कम इंडिगो रो ताठारु कम वायोलेट सबटु वेवलेंथ कहार अधिक रेड रो तो सबटु रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहार अधिक
सबुठ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहार कम रेट रो तो आम टिके पूर्व पढ़ुले d इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इनटू a तो मुझे ये लिखि पारि d इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू एंड म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ दैट मींस जहार वेवलेंथ अधिक से कम डेविएट करिवो जहार वेवलेंथ कम से बेसी डेविएट करिवो तो वेवलेंथ कहार अधिक रेड रो अधिक तो से कम डेविएट करिवो वेवलेंथ कहार कम वायोलेट रो तो से बेसी डेविएट करिवो बुझा पड़छे ठीक अछि आगो बुझबा एबे जिबा अंगुलर डिस्पर्शन पिला माने आमे गोटे प्रिज्म नैचे प्रिज्म दे के आमे व्हाइट लाइट पास करेले प्रिज्म दे के आमे व्हाइट लाइट पास करेले से कौन कला सबुठु बेसी डेविएट कला वायोलेट कम डेविएट कला रेड तो वायोलेट रो डेविएशन को जदि मु डीवी नेबी एंड रेड रो डेविएशन को जदि मु डीआर नेबी ठीक ताहले एई दुईटा कलर को हमें कहबा एक्सट्रीम माने जणे टॉप रे रहउची जणे बॉटम रे रहउची तो दुईटा एक्सट्रीम कलर भितर जो एंगुलर सेपरेशन ये केते डेविएशन करूची डीवी ये केते डेविएशन करूची डीआर एमानो को भितर जो सेपरेशन सेटा को हमें कोन कहबा एंगुलर डिस्पर्शन तो एंगुलर डिस्पर्शन कहिले दिस इज डीवी माइनस डीआर सबुठु बेसी के डेविएशन करूची वायोलेट सबुठु कम के डेविएशन करूची रेड ये केते डेविएशन करूची डीवी नबा किछि किछि बहिरे टाको डेल्टा भी दिए किछि किछि बहिरे डेल्टा आर भी दिए एमके कंफ्यूज होबने डेल्टा भी ये एमते लिखले भी चलबो एमते लिखले भी चलबो ठीक अछि किछि किछि जगह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू न लेके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन भी लिखंती तो कंफ्यूज होबने एका करा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखिथिबो एंगुलर डिस्पर्शन लिखिथिबो ठीक अछि तो एमान को भीतर जो सेपरेशन एटा को हमें कोन कहिबा एंगुलर डिस्पर्शन कोन कहिबा एंगुलर डिस्पर्शन दैट मींस एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू एक्सट्रीम कलर माने रेड और वायलेट एमान को भीतर थिबा एंगुलर सेपरेशन मतलब माने डीवी जगह हम केते लिख नॉर्मल डी हम जानि सकते म्यू माइनस 1 इनटू ए तो डीवी जगह लिख दोची म्यू भी माइनस 1 इनटू ए माइनस म्यू डीआर लाइक जगह केते लिख दोची म्यू आर माइनस 1 इनटू ए तो एटा हिजो म्यू भी ए माइनस म्यू आर ए माइनस माइनस प्लस ए को खाइला तो केते बंच जीवो ए कॉमन नै गेले दिस इज म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू ए एटा हमर कोन हे गेला पिला एंगुलर डिस्पर्शन कोन एटा एंगुलर डिस्पर्शन केते सेटा पिला माने म्यू भी माइनस म्यू आर इनटू ए ठीक अछि बराबर देखि दियो देन हमें जीवा डिस्पर्सिव पावर कौन ये डिस्पर्सिव पावर पिला माने बुझवा को चेष्टा करो डिस्पर्सिव पावर सिंबल पिला माने ओमेगा हैला एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन मीन माने एवरेज एंगुलर डिस्पर्शन बाय मीन डेविएशन इटी मीन माने एवरेज को होची तो दैट इज इम्प्लाइज टू ओमेगा इज इक्वल टू एटा को लिखि पारिबी dv माइनस dr बाय d ठीक अछि तो दैट इज इम्प्लाइज टू ओमेगा इज इक्वल टू पिला माने dv माइनस dr dv जगह लिखबी केते dv माइनस dr जगह केते लिखबी म्यू v माइनस म्यू r इनटू a डिवाइडेड बाय केते म्यू माइनस 1 इनटू a को खाइला
तो ओमेगा केते हे गला म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू माइनस 1 पिला माने तुम माइंड भीतर क्वेश्चन आसुथिबो जे इटे वायोलेट रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकेली इटे रेड कलर पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पकेली इटे जो म्यू पकेबी कहा पे पकेबी को कलर पे पकेबी पिला माने बेले बेले कोन हेतिबो क्वेश्चन रे मन रखो आमे देखिले विविध हिसाब रे वायोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो आमे जदी एमानकर यार डेविएशन देखिबा 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 डिवाइडेड बाय 7 करबा सेटा जो एवरेज डेविएशन मन करे यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समस्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट कलर पाई डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड सब मु कैलकुलेट कली एंड समान कर एवरेज नली एवरेज कोठा आसीबा कथा सीक्वेंस रे मिडिल रे के अछि मिडिल तो ग्रीन आसीबा कथा ग्रीन येलो आसीबो मन रखे पहला येलो कलर टा हम कहू एवरेज कलर कोन पे यदि समस्त संकर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मु जोड़ी भी डिवाइडेड बाय 7 करिवे मते कहार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आसी पहुंचबो येलो कलर जदि तुमको क्वेश्चन रे वायोलेट रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि रेड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि एंड तुमको येलो देछि तो इथे येलो पुट करियो जदि येलो हमको देइनी मानिले येलो हमको देइनी तल कोन पुट करबा जदि येलो देछि और पिला दैट इज इम्प्लाइज टू एट एमटी भी लिखि परिबी ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू येलो माइनस 1 एमटी भी लिखि हबो पिला माने एमटी भी छेडा लिखि हबो ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर मानि लियो तुमको किछि केस रे तुमको येलो कलर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देइनी सही जगह रे कोन करबो जदि वायोलेट रे देछि रेड रे देछि वायोलेट रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्लस रेड रे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बाय 2 माइनस 1 सो दैट एवरेज पाई गलो मानिले तुमको ब्लू रो देछि ग्रीन रो देछि ब्लू ग्रीन अप्लाई करिवो ठीक अछि पिला माने तो एठी हम प्रिज्म चैप्टर टा बहुत छोटा चैप्टर इजी अछि गोटे लॉन्ग क्वेश्चन अछि हमें इजीली कवर कर परिबो देखिबा हम हल्का फुल्का किछटा न्यूमेरिकल कर दबा जोटा हमको क्वेश्चन आसी छि किछटा पहले मैंने क्वेश्चन नहीं दिया कैलकुलेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ एन इक्विलैटरल प्रिज्म माने एंगल ऑफ प्रिज्म हला 60 डिग्री एंगल ऑफ प्रिज्म हला 60 डिग्री फॉर व्हिच एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन इज 60 डिग्री डीएम द्वारा 60 डिग्री असल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फार्मूला कौन जान म्यू हमको चलगा बहुत इजी पिला माने म्यू इज इक्वल टू sin a प्लस dm by 2 by sin a by 2 तो sin a जगह 60 plus 60 by 2 by sin 60 by 2 60 120 by sin 60 sin 30 sin 60 हला कहते हैं √3 by 2 sin 30 हला कहते हैं 1 by 2 2 को खाइला √3 आप देख लियो लेवन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 has a refracting angle of 60 degree refracting angle means the refracting angle of prism 60 degree at what angle a ray must be incident on it so that it suffers minimum deviation पिला माने क्वेश्चन हमको कौन देछि पिला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू देला केते √2 और रिफ्रैक्टिंग एंगल ऑफ प्रिज्म माने a = केते 60 डिग्री क्वेश्चन पर चला एंगल ऑफ इंसिडेंस पर चला so that it suffers minimum deviation रे पिला माने I = E R1 = R2 D = dm minimum deviation रे हम कौन लिखि परिबे पिला mu = sin a plus dm by 2 by sin a by 2 तो म्यू जगह केते लिखिबे पिला √2 = sin a जगह केते 60 plus dm by 2 by sin 60 by 2 sin 60 by 2 हला 30 so that is implies to एटा कोन हे गला √2 रहिला 30 sin 30 टा के मल्टीप्लाई करते sin 30 रा वैल्यू केते 1 by 2 = sin 60 plus dm by 2 तो that is implies to एटा गला 1 by √2 = sin
60 plus dm by 2 એટલે sin કેતે ડિગ્રી હેલો 1/√2 45 ડિગ્રી તો હું લખી દઉં છી 60 plus dm by 2 is equal to 45 degree. That is equal to dm हे जीवो केते पिला माने dm plus 60 degree हे जीवो केते 90 degree. That is equal to dm हे जीवो केते 30 degree. dm हे जीवो केते 30 degree. dm पाइ गेला 30 पिला माने म तुम कहि छि जेतबे for minimum deviation I is equal to e, r1 is equal to r2, d is equal to dm. The minimum deviation rate ମୁଁ ଲେଖି ପାରିବି d is equal to I plus e minus a. तो I is equal to e तो मैं लिख दीजिए 2i minus a, d is equal to dm. So that is implies to 2i is about dm plus a. So that is implies to I is about dm plus a by 2. dm केते पहला 30 plus 60 by 2 जोटा के आसिला 45 डिग्री. आपण देखियो पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. A ray of monochromatic light is incident on refracting face of a prism angle 75 degree. गोटे प्रिज्म देइची जार एंगल होची 75 डिग्री ता माने a हला 75 डिग्री. It passes through a prism and is incident on the other face at the critical angle. So कहला गोटे रे एमती गला other face रे incident हला और से इंटरफेस ऊपर पड़ी गला माने क्रिटिकल एंगल दे जदी इंसिडेंट हबो ताले से तो से इंटरफेस ऊपर पड़ी जबा ना. बढ़िया जदी इंटरफेस रे पड़िला ताले जो ई ईटा हबो केते डिग्री पिला 90 डिग्री हबो. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देछि पिला माने √2. व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑन द फर्स्ट फेस. हमको आई पचारिला क्वेश्चन नंबर आई पचारि छी पिला माने मु लिखि दउ छी हम इंफॉर्मेशन सब नै गले आई हमको क्वेश्चन रे पचारि छी जिबा. तो पिला माने ए देला 75 डिग्री, ई देला 90 डिग्री, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देला √2. पिला माने मानि नियो ए एंगल ता किछि r1 ए एंगल ता किछि r2 त माने मु r2 पाइ जिबि. आउ कोन जणा अछि a is equal to पिला माने r1 plus r2. तो इटी जदि मु स्नेल्स लॉ पकेबी ना इटी जदि मु स्नेल्स लॉ पकेबी sin r2 by sin e is equal to 1 by mu. That is implies to sin r2 रहिला sin 90 is equal to 1 by √2. That is implies to sin r2 hela 1 by √2. That is implies to r2 hela पिला माने 45 डिग्री. यदि r2 हला 45 डिग्री now r1 केते हि जिवो a minus r2. That is implies to r1 is equal to 90 minus 45 degree जोटा कि 45 डिग्री. तो r1 भी 45 डिग्री आसी गला 90 रीच 75 हेले केते आसीला ताले 30 डिग्री. तो r1 हे गेला केते पिला माने 30 डिग्री, r2 हे गेला केते पिला माने 45 डिग्री. sin i हे जीवो √2 into sin 30 रो वैल्यू केते पिला माने 1/2 हेले केते आसी जीवो पिला माने 1/2 हेले sin i हे गला 1/√2. That is implies to I हे जीवो केते 45 डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि कंपोजिट प्रिज्म क्वेश्चन बहुत बड़ा है जाई मतलब क्वेश्चन को आगे इंफॉर्मेशन बाहर कर दी तापर क्वेश्चन लिखि देबा. A composite prism ABC is made up of two identical right angle prism ABD ADC. गोटे कंपोजिट प्रिज्म माने गोटे प्रिज्म जोटा दुईटा डिफरेंट मटेरियल रे तयारी. ABC दुईटा डिफरेंट मटेरियल रे तयारी ABC identical right angle prism ABD and ADC. Refractive index
of different metal of refractive index √3 and mu respectively. यार refractive index √3 यार mu. A ray of light incident on face AB, गोटे ray of light गोटे ray incident ହେଇଛି of this prism at 60 degree. केते angle रे incident ହେଇଛି 60 degree. It is observed that the final emergent ray gauges along the face. ता माने मानिनियो एटा एमती गला एंड एठी गोटे नॉर्मल ड्रॉ कली माने बारंबार डिस्टर्ब करंट पळोचे तो टिके एडजस्ट करिवो ठीक अछि तापर कोन कहला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 mu respectively. A ray of light incident on face AB of this prism at 60 degree. It is observed that final emergent ray gauges along the face. माने face ऊपर एमती आसीगला माने पक्का एटा क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट हेतिबो क्रिटिकल एंगल रे इंसिडेंट हेतिबो सी रे इंसिडेंट हेतिबो एंड एटा देछि √3 लेट एटा हला पिला माने r तमको कोन पचला म्यू पचरला तो एटा केते डिग्री ई हेतिबो केते डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री तो आमे जदि क्रिटिकल एंगल ता पाई जिबा किछि भी तरीका रे क्रिटिकल एंगल ता पाई जिबा ताहले म्यू पाई जिबा ठीक पिला लिखि दोछि पिला क्वेश्चन ता लिखि दोछि देखो एंगल एटा 90 डिग्री एटा 60 डिग्री एटा 60 डिग्री एटा 30 डिग्री एटा 30 डिग्री तमाने एंगल ऑफ प्रिज्म देला 30 डिग्री सॉरी 60 डिग्री एंगल ऑफ 6 प्रिज्म देला 60 डिग्री एंड हमको जाना छि a = r1 + r2 एंड ए केस रे r + c हम एटा r पाई जिबा r किंति पाइबा नै sin 60 by sin r is equal to √3 तल sin r हे गला sin 60 by √3 sin 60 पिला माने केते √3 by 2 by √3 जोटा कि 1 by 2 तल r केते हे गला पिला माने 30 डिग्री r हे गला 30 डिग्री यदि r हे गला 30 डिग्री नाउ r plus c हला 60 डिग्री ताले c हे गला 60 minus 30 जोटे कि 30 डिग्री हमने क्रिटिकल एंगल हे गला 30 डिग्री यदि क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री हे गला नाउ sin c by sin 90 is equal to 1 by mu so sin 30 by 1 is equal to 1 by mu that is implies 2 sin 30 लगे तो 1 by 2 is equal to 1 by mu so mu हे गला 2 सहज अछि पिला नेक्स्ट क्लास रे पढिबा।